उन्होंने चयन किया अगर राजस्थान का, तो आप पूछ सकते हो कि हम सबके लिए कितने बड़े गर्व की बात है। भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट आज बनी हुई है, उनके भी कान खड़े होंगे। सोनिया गांधी जी का रिश्ता एज ए राज्यसभा मेंबर राजस्थान से हैं। In an emotional letter to the people of Raebareli, Sonia Gandhi promised to come back to the place which made her what she is today. But after decades of Gandhi family rule, could it be that it was also the fear of a direct loss that compelled Sonia to leave while she was still in control? In Raebareli now, there's a void of uncertainty. If not Sonia, then who? मुझे ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के दिल में आप लोगों के लिए एक खास जगह है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। अगर हम ये चुनाव जीते हैं तो ये सच है कि इस रिश्ते के नाते जीते हैं जो मेरे परिवार और आपके बीच है। पहले इमोशनल बयान, फिर नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर तीखा हमला। 2014 के लिहाज से कांग्रेस के लिए सियासी ऊबड़ खाबड़ कही जा रही सड़क पर प्रियंका गांधी रफ्तार बढ़ाने के लिए लगातार गियर बदल रही हैं। The question for the Congress here in Raebareli is that with Sonia Gandhi going via the Rajya Sabha route, who will take her space? Who will take the baton from her? क्या मूड बन रहा है रायबरेली में? साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन यहाँ पर कांग्रेस का ही मूड रहता है। कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया है, बहुत काम किया है रायबरेली में। एम्स दिया, ITI दिया, रेल कोच कारखाना दिया, पहिया कारखाना दिया, FDDI दिया, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज दिया, सब कुछ रायबरेली में कांग्रेस ने दिया, सोनिया जी ने दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर लड़ेंगी तो कुछ मिजाज बनेगा? निश्चित ही जीत प्रियंका वाड्रा की ही होगी। पिछले 4 साल पहले जब कोविड आया था, किसी भी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पे नहीं आया। आज लोकसभा चुनाव है तो राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं। आज राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव अगर ना होता तो राहुल गांधी जी यहाँ पे ना थे। इस बार अमेठी 2019 में कमल खिला था, 2024 में रायबरेली में भी कमल खिलेगा और रायबरेली सीट गांधी परिवार हारेगी। इस बार कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से आएगा, हम लोग उसको उसी तरह भगाएंगे जैसे अमेठी की ने राहुल गांधी जी को भगाया था। रायबरेली सांसदी से सबसे पिछड़ा क्षेत्र था इनका। इतने दिनों से यहाँ की प्रधानमंत्री भी रह चुकी इंदिरा गांधी, तब से अब तक कुछ नहीं हुआ और उम्मीद भी नहीं की जाती आने वाले समय में। बीजेपी रायबरेली का विकास नहीं विनाश करने के लिए आएगी अगर बीजेपी आएगी तो। इसलिए हम सभी भाइयों साथियों का मानना है कांग्रेस यहाँ के लिए बेटर है और सर्वोत्तम है। If I were to look for a relatively safe seat for the Congress, it would be Raebareli. Therefore, you would expect Priyanka Gandhi to choose Raebareli if she is to make her political debut. But the BJP, even in Raebareli, intends to make extra effort to try and defeat whoever is the Congress candidate, whether it's a Gandhi family member or a non-Gandhi family member. Remember in assembly elections in UP last time, it's the BJP which dominated Amethi Raebareli. So Raebareli too can no longer be called a safe seat for the Congress. Que sera, sera. Whatever will be, as the famous song goes. But Raebareli isn't the only bastion of suspense. There's a question mark over Amethi as well. The seat may have been handsomely won by BJP Smriti Irani in her second attempt in 2019. But a clamour has once again kicked off within the Congress for Rahul Gandhi to at least attempt a mission Ghar Wapsi in Amethi. So the high point or the climax of the Bharat Jodo Nyay Yatra, where Rahul Gandhi, who lost Amethi in 2019, is back in what was once the traditional bastion of the Gandhi family. It was a rumbling homecoming of sorts. A king, if you will, who was vanquished from his own kingdom, returning on a yatra after 5 years. लेंगे बदला देंगे खून भैया बिना अमेठी सून क्योंकि अमेठी की शान अमेठी जान किसानों का मसीहा। The message
was unmistakable and yet filled with that traditional Congress intrigue. पूर्व सांसद राहुल गांधी का स्वागत करेंगे और दिल से करेंगे और प्रियंका जी मेरी आ रही हैं, वो उनको देने के लिए मैं फूल लिए उनसे कहेंगे कि आप पुनः अमेठी से चुनाव लड़िए, चुनाव में आइए, हम लोग जिता करके 5 लाख वोट से अपनी जिता करके सांसद भेजेंगे। Rahul hasn't really been a familiar sight in Amethi since 2019, since his defeat. But he has been the Member of Parliament for this constituency for 15 years. That's 3 terms. And so for the locals, today, there's a sense of deja vu. A hark back then to a young Rahul Gandhi taking forward his family legacy from his uncle Sanjay Gandhi from 1980 in Amethi. लेकिन इमरजेंसी ने सत्ता की ताकत ऐसे आदमी के हाथों में पहुंचा दी जिसे गैर जिम्मेदार, घमंडी और बदले की भावना से भरे व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। Many here remember the churn of that time. After emergency was lifted in 1977, fresh elections were called. Indira chose to fight from Raebareli, where she already had a secure base, and her younger son Sanjay opted for Amethi. मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का गढ़ था अमेठी। कांग्रेस विचारधारा थी। लोगों ने आग्रह किया, अनुरोध किया कि माँ बेटे अगल बगल से लड़ें, तो दोनों ने रायबरेली वो लड़ नहीं थी, तो संजय जी ने अमेठी से पर्चा दिया। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो एक पारिवारिक रिश्ता है दोनों में, दोनों को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। There was a wave of sympathy, a wave of support for Indira, which brought the Gandhis back to both seats, and that too with a resounding margin. Things took a tragic turn just months later when Sanjay Gandhi died in an airplane crash in Delhi. A grieving Amethi rewarded the Gandhi family again, this time with Sanjay's older brother Rajiv. It was Rajiv's forced entry essentially into politics in the wake of an unprecedented family tragedy. The airline pilot had to fold away his wings and get right down to business, taking forward his family legacy. Amethi stood loyal to the Gandhis, with Rajiv being elected in 1984 and then re-elected in 1989. But in 1991 came another abrupt and tragic upheaval, with Rajiv Gandhi's assassination just before the election. Amethi had lost their crown prince, but if anything, it essentially galvanized the constituency in its loyalty to the family. You had Rajiv's close aide, Captain Satish Sharma, taking over and representing Amethi till 1998. It's often said that nothing can be taken for granted in politics. Not bastions, not legacies, not strongholds. This would come true in 1998, when the Congress faced the brunt quite simply for complacency, as Amethi was lost to the Vajpayee wave that swept Uttar Pradesh. But again, not for long. कैप्टन साहब चुनाव लड़ रहे थे, सिटिंग एमपी वही थे, राजीव जी के बाद उन्हीं को बनाया गया था। शायद उस जनता के अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे, और जैसे ही सोनिया जी आई, हर घर में दिवाली मनाई गई, ईद मनाई गई, और लोगों ने हाथों हाथ उनको ले लिया, लाखों से जिता दिया। You know, Sonia Gandhi's entry into politics, first she contested from Bellary, if you will recall, in South India and Karnataka. She wins that seat against Sushma Swaraj. But I think Sonia Gandhi was intelligent enough to realize that if she had to establish family control or her dominance over the Congress, she needed to win in North India and Amethi in particular. It would then signal that the baton had been passed in a way from Rajiv Gandhi, her late husband, to her, which is why I think she chose to contest that 1999 election.
After only a few months, Amethi welcomed back a Gandhi family member with open arms. And just to understand the magnitude of that victory, Sonia managed over 4 lakh votes out of the 6 lakh that voted in Amethi that year. And it was during this term, this was between 1999 to 2004, that a young and reclusive Rahul Gandhi emerged in public and appeared for campaigns in the shadow of his mother. The question was not if, but when. You have to feel it. If you want to do it at the right time, you do it. I don't think pressure is really an issue. You can't really be pressurized. But clearly you are not the type who is averse to politics. Is that true? I'm not averse to politics, but that doesn't mean I'm going to join politics. क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आप लोगों पर वही दबाव रहेगा कि राहुल को बड़ा संभाल के रखना होगा, राहुल पर भी सारी की चीजें हो सकती हैं, डर नहीं लगता है सब सोच के? जी डर तो नहीं लगता, डर नहीं लगता, बिल्कुल। कहीं मन में कोई कर्तव्य है, धर्म रहा है परिवार का। That time would be sooner than anyone thought. Sonia, who had enjoyed a resounding victory, quickly made way for her son in the 2004 general elections. आपके स्वागत ने मेरे हृदय को और अधिक छुआ है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अमेठी से चुनाव न लड़ने के मेरे फैसले ने आपको निराश किया है। मुझे भी दुख है कि मैं आपकी ये उम्मीद पूरी नहीं कर पाई हूँ। A veritable red carpet rolled out for the new generation Gandhi. I'm not looking at the challenge here as an election. Elections come and go here. It's not, I'm not really concerned about that. The challenge here is a much bigger challenge of development and of looking after the people and understanding what they want. So there is a huge challenge here. आपने अमेठी सीट क्यों छोड़ दी? रायबरेली से लड़ना क्यों ठीक समझ रही? क्योंकि अमेठी एक क्षेत्र है जो राजीव जी का क्षेत्र था, और राहुल, क्योंकि राहुल चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, तो सभी ने, हम लोग ने बातचीत किया और अपने परिवार के बीच में, और ये तय हुआ कि शायद अमेठी राहुल जी के लिए ठीक रहेगा। तो क्या आप अपनी जगह राहुल गांधी को देने की कोशिश कर रही हैं? ऐसा सिंबल की बात नहीं है, वैसे उनके पिताजी की जगह है। तो इसको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा? आखिरी क्वेश्चन लोग तय करेंगे। Amethi had really little option but to accept. After all, this was Rajiv's son, and they felt indebted to the Gandhi परिवार। शुरू में ऐसा लगा कि राहुल गांधी का नामांकन सादगी भरा होगा, लेकिन जब मुंशीगंज गेस्ट हाउस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी निकले तो कारवां बढ़ता गया, लोग जुटते गए। ऐसा नामांकन मैंने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था, और ऐसे यशस्वी और तेज प्रतापी उम्मीदवार अमेठी के उम्मीदवार बने हैं। ऐसा है कि यहाँ पे उनके टक्कर का कोई नेता है नहीं राजनीति में, नाम से ही उनके परिवार से ही काफी है। In 10 years, from being Rajiv and Sonia's son, Rahul Gandhi slowly carved his own identity, becoming Amethi's famous prince, loved and adored. There was no match for Rahul, at least in terms of votes. तो जो एक विकास था, प्रदेश की सरकारें फिर बनी नहीं 1989 के बाद कांग्रेस की, तो वहां का जो राज्य से विकास था वो कमजोर पड़ा, और जब वो कमजोर पड़ा तो ऐसा लगा जैसे जो एक गति थी, एक स्पीड थी, वो कहीं न कहीं ढीली पड़ी, तो प्रतिनिधि को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। But the opposition kept the dynasty charge on him all through, lining his rule of Amethi with derisive attacks that would run like a background score essentially.
तो डायनेस्टी का बिल्कुल ridiculous मुद्दा है। I believe that this word is incorrect. This is not a dynasty. We have won and we have lost democratically. Through several waves, big and small, apart from the 1998 loss, of course, Amethi had stood as a Gandhi fortress, almost invincible. Almost. किस तरह का राजीव गांधी जब सांसद थे तो क्या फर्क था और क्या जुड़ाव था उनका जनता से? क्या वही जुड़ाव अभी नजर आता है राहुल गांधी का या वक्त बदला? राजीव गांधी की ही वजह से जो है अमेठी की पहचान बनी। राहुल गांधी जी जैसे आते हैं आकर के ऐसे घूम करके वापस लौट जाते हैं, और जब वो यहाँ से सांसद थे तब भी उन्होंने मतलब कभी जनता से दूरी उन्होंने बना करके रखी। राहुल गांधी उसी राजीव गांधी या वंशवाद का फायदा अमेठी में उठाया। काम तो कुछ नहीं हुआ, योजनाएं तो बहुत बनी लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हुआ। देखिए, सियासी समीकरण अमेठी भावनाओं का खेल है और भावनात्मक जुड़ाव यहाँ के लोगों को गांधी परिवार से रहा है, लेकिन उस भावनात्मक जुड़ाव में दूरियां अगर देखी जाए तो राहुल गांधी के सत्ता पक्ष का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है उसमें कहीं न कहीं अमेठी के लोगों को दूरी बना दी है। In the lead up to the 2014 elections, it was no longer a saffron wave. It was the Narendra Modi wave that was capturing the imagination of voters. And finally, after years, the Gandhi Parivar had a heavy-hitting challenger. Cue Smriti Irani. Rahul Gandhi's leadership is defined by the state of his constituency, which right now faces many challenges. He's out only when it's convenient for him, when he wants to fight in the election, when he wants to gain something for himself or his organization or his family. नाम को तो बड़ा वोट दिया, अब काम को वोट दीजिए. Amethi had been won easily thus far by the Gandhis. But in 2014, they had a real fight on their hands in the form of the tough-talking former TV star who had carved an aggressive place for herself in Modi's BJP. वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस पार्टी जो देश में जाकर विकास पर भाषण देती है, वो इतने अक्षम है कि अपने ही संसदीय क्षेत्र में विकास का काम नहीं कर पाते हैं. Smriti Irani fought tooth and nail against what the BJP had branded the Congress's Shehzada. 10 साल हो गए मैं अमेठी में काम कर रहा हूँ और अमेठी में पारिवारिक रिश्ता है, अच्छी चीज हो. But then Amethi was still a fortress and wasn't done with the Gandhis just yet. Even the massive Modi wave couldn't bring it down in 2014. Rahul retained the seat, but there was clear damage and a major drop in the victory margin. A moral victory for Smriti and an ominous foretelling of what would happen to Rahul here 5 years later. I remember Amit Shah, who was in charge of the campaign, saying, "Hum unko wahan bhi takkar denge. We will give them a fight even in their bastion." And that's exactly what happened. You suddenly raised the pitch. Generally, the feeling was the opposition gave a soft ride to the Gandhis in Amethi, Raebareli. Not after the BJP rose under Modi Shah. They went into the battleground and gave the Congress a fright. It should have been a wake-up call. The word never and Indian politics make terrible bedfellows, and the next 5 years would prove exactly why. Both Rahul and Smriti grew in stature. Rahul being elevated as the president of the Congress, while Smriti, who was rewarded with a cabinet berth in the new Modi government and empowered to keep the heat on Amethi. For the first time, possibly, a national president of a national political party is embarrassed that his own karyakartas are saying run. Rahul versus Smriti 2.0 became the inevitable headline on the road to the 2019 general election. Having tasted blood 5 years before, Smriti Irani this time was battle ready and clearly going for the kill. Defeating Rahul Gandhi in Amethi in 2019 was the making of Smriti Irani. Until then, she was seen as a TV soap opera star who had made it into politics, taken the Rajya Sabha route. But by taking on Rahul Gandhi and defeating him in Amethi, she automatically became a giant killer, much like Raj Narayan had become in 77 when he defeated Indira Gandhi in Raebareli. Rahul's sudden decision months before the elections to compete not from one but from 2 seats, Amethi and Wayanad, was a dead giveaway. A sure sign of who really had the upper hand in Amethi. Even the Congress clearly felt the fortress was in peril. It is unfortunate that it's unexpected in politics, that you would lose and you would still come back. But I had a promise to keep.
Especially to 3 lakh people who voted for me in 20 days. For 3 lakh people to believe in you, that is a huge blessing. I can only say people with political resolve always jump into the fire. They don't run from it. And in May 2019, that fortress fell. An epic face-off with Smriti Irani winning the seat by over 50,000 votes. And to the Gandhi family, send Rahul Gandhi back to fight the Lok Sabha election in 2024 from Amethi, and he will lose again. That is my promise as a BJP worker. Well, here we are now in 2024. And Smriti isn't the only one waiting for Rahul's decision. Even sections of his party believe that he should step up and fight to reclaim Amethi. But will he accept the challenge? The other question that's being asked is that Rahul was in Amethi. Mr. Kharge also talked about his connect with Amethi and how the people of Amethi were missing him. Political survival of Rahul Gandhi, reclaiming the legacy of your family. He will decide. He will. It's up to him and this Central Election Committee, the Congress President, Srimati Sonia Gandhi, leader of the Congress Parliamentary Party. They will take a collective call. I mean, obviously, yesterday when the rally was taking place, I talked to a large number of people, and they all said that we made a mistake in 2019. We want Rahul Gandhi back. कोई कुछ लोग मेहमान लोग आया है वो चले जाएगा. राहुल गांधी गांधी परिवार यहाँ का जनता के दिल में बसा है, वो हमेशा रहेगा. पूरे भारतवर्ष में किसी से पूछो अमेठी किसका है, गांधी परिवार. कोई आदमी अमेठी के जाता था, उसका सिर्फ इतना परिचय किसी के यहाँ चला जाए कि मैं अमेठी से आ रहा हूँ, तो उसको स्पेशल स्टेटस मिलता था. वो सब खत्म हो गया. वो सिमट के रह गई है भाजपा वहां पे कुछ खास लोगों में. जनता का लगाव नहीं था. The stakes stacked against them, the winnability ratio, do you think the probability is high for Rahul Gandhi has been MP 3 times from here. He lost 2019 by a margin of 55,000 in an electorate of almost 10 lakhs. And there is a connect. There is a desire for people to be reconnected. As I said, in Raebareli, everybody I talk to is talking of Priyanka ji's name. In Amethi, people are talking of Rahul. But this is incidental to the Bharat Jodo Nyaya Yatra. The focus of the Bharat Jodo Nyaya Yatra is not to search for candidates. It's to take the ideological message which Rahul Gandhi is repeating in meeting after meeting after meeting. देखिए, बिल्कुल राहुल जी को लड़ना चाहिए और राहुल गांधी जी को लड़ेंगे भी. अमेठी से राहुल गांधी जी का जो नाता है वो भावनात्मक है, व्यक्तिगत है. वो अमेठी को परिवार कहते हैं और मानते भी हैं. अमेठी में कमल का फूल दोबारा खिलेगा या फिर आपको लगता है कि पंजा जो है उसका सिक्का चलेगा? किसी हालत में स्मृति ईरानी जी नहीं जीत रहा है. किसी हालत में वापस कांग्रेस यहाँ जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा. अमेठी का जनता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा. मैं 2019 में बीजेपी का वोटर हूं, भूतपूर्व अंधभक्त हूं. अगर आप कह ले तो मैं दशकों से नहीं जुड़ा हूं कांग्रेस से. मैं बीजेपी का वोटर रह चुका हूं, भूतपूर्व अंधभक्त हूं. लेकिन जो अन्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया है इस देश के साथ, जो अन्याय जो उन्होंने छला है हमको, उसको लेकर के हम राहुल भैया के साथ हैं. राहुल गांधी अमेठी के बेटा हैं. वहाँ यहाँ पर उनको जो है राजनेता के रूप में नहीं देखती, अपने भाई अपने बेटे के रूप में देखती है. और वो कांग्रेस के शेर हैं. यहाँ का नौजवान, यहाँ का महिलाएं, सारे लोग जो है राहुल गांधी के साथ कंधों से कंधा मिला करके 2024 में हम लोग चुनाव बम्पर वोट से जिता करके स्मृति ईरानी को पेवेलियन भिजवा देंगे. Now whether Rahul throws his hat in the Amethi ring remains a question, but Smriti has upped the ante with yet another dare. सबसे उम्दा काम दीदी स्मृति ईरानी करा. 2014 के बाद जब यहाँ वो लड़ने आई, दुर्भाग्य से 2014 वो नहीं जीत पाई, लेकिन बराबर 5 साल 2019 तक वो लगातार यहाँ संपर्क में रही, हर महीने आती रही. 24 में तो और बड़े मतों से जीतने जा रही हैं. जो कांग्रेस की हवा है वो तो निकल चुकी है पूरे देश से. जब 400 पार है तो उसमें अमेठी भी शामिल रहेगा. आपको लगता है कि राहुल गांधी जीत सकते हैं? कतई नहीं जीत सकते हैं. उनको जनता ने नकार दिया है. एक बार बहुत बड़े अंतर से हराया 55,000 से, और ये 1.5 लाख का अंतर होने जा रहा है. 359 दिन बाद अब की राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं. हमें तो कांग्रेसियों के ऊपर तरस आता है. ये बेचारे कहते हैं राहुल जी लड़ जाइए, और राहुल जी डर के मारे अमेठी छोड़ के भाग जाते वायनाड. उसके बाद इनका पंचलाइन के लेंगे बदला देंगे खून. बदला किससे लेंगे? अमेठी की जनता से. जिसको अपना घर कहते हैं उससे बदला लेंगे. आपने सियासत के कई दौर देखे, अमेठी की जनता के लिए क्या बदला? आज की डेट में पहली बात तो हमारे नेता जो हैं वो उपलब्ध हैं. यहाँ स्मृति ईरानी जो है
सांसद हैं और वो मौके पर हर आदमी के लिए सुलभ हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता देखते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री अमेठी से बनेंगे, अब संभव नहीं। जब तक आदमी कुछ मेहनत नहीं करेगा, काम नहीं करेगा अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, तब तक वो क्या आगे बढ़ेगा। खाली आप दिल्ली में रहोगे, बाहर रहोगे 6 महीना आउट ऑफ कंट्री, तो क्या पब्लिक कैसा आपके वो करेगी, कैसा आपको सपोर्ट करेगी। इंडस्ट्री के नाम पर वहाँ पर केवल खंडहर खड़े रहे। आज की तारीख में जो विकास हो रहा है, ऐसा विकास अमेठी ने कभी नहीं देखा, जबकि ये वीआईपी क्षेत्र रहा है। इतने आवास मिले हैं, बिना जाति बिरादरी का भेद किए आवास मिला है कि इतना काम कभी अमेठी में नहीं हुआ है। So can Rahul Gandhi reclaim, or even for that matter, go ahead and fight for lost territory in Amethi? Will he take on Smriti Irani? Well, we'll know soon enough. But also, what about Raebareli? Will the people of Raebareli have to look beyond a Gandhi? Will they have the option of actually going ahead and voting for a Gandhi this time? The only way that's going to happen is if Priyanka Gandhi really steps into the game and decides that she's going to enter into electoral politics as well, and goes ahead and steps into the shoes of her mother, takes forward her mother's legacy. All these questions will continue, but the answer at the end of the day, as always, lies in India's bristling election vote. Another election season looms before us. 24 में 400 पार। इस बार पार्लियामेंट से बाहर 548 constituencies in focus, the familiar suspense over names, tickets and battles. But somehow, two from the crowd attract a special attention. Somehow always manage to stand out. रायबरेली मेरी कर्मभूमि है। अमेठी में पारिवारिक रिश्ता है। They say change is the only constant, right? But somehow, the Lok Sabha constituencies of Amethi and Raebareli have to fight this logic. मुझे ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के दिल में आप लोगों के लिए एक खास जगह है। Always seen as the bastion of the Gandhi family. But how long can you defy the inevitable? People with political resolve always jump into the fire. They don't run from it. Amethi was lost on Rahul's watch in 2019. And this year, Sonia has exited from Raebareli. Is there a Gandhi in the future of these two heartland towns? Or is that now a thing of the past? To know the course of future, we have to look deep into the past. A series of events that shaped how Amethi and how Raebareli became Gandhi bastions. It was their tryst with the Gandhis.
अमेठी, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कर्मभूमि थी। मेरी और राहुल की कर्मभूमि है। रायबरेली और अमेठी वैसे मेरा घर जैसा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अपने घर आना जाना का क्या कोई इनकार कर सकता है? The seat, which she says embraced her warmly in her difficult times, the otherwise obscure town of Raebareli, has become a legacy that the Congress bastion has held on to since just years after India's independence. Jawaharlal Nehru's son-in-law, Feroz Gandhi, won the first ever Lok Sabha election from this backward class-dominated constituency back in 1952. And it was the beginning of an unusually loyal relationship between a political family and a dusty heartland town. Voters of Raebareli next welcomed Nehru's daughter, Indira Gandhi, in 1967 and then again in 1971. But a national upheaval came right after, when emergency was declared in 1975. Since Raebareli was Indira's constituency, it became the epicenter of a furious political battle that would essentially shape the India of that time. And it began in the country's courts. You had socialist leader and freedom fighter Raj Narayan filing a case against Indira in the Allahabad High Court, accusing her of electoral malpractices. In what was deemed a monumental upset for the rising star that was Indira, the High Court found her guilty. The impact obviously quaked the Indira Congress and paved the way for her loss of Raebareli to the Janata Party's Raj Narayan in 1977. It was a historic judgment nonetheless, one that found Indira Gandhi guilty on 2 counts of electoral malpractice. It invalidated Indira's election and disbarred her from office for 6 years. Raj Narayan stood triumphant in front of the world press. The people rejoice and reaffirm their faith in the democratic institutions of India. I accept the judgment with humility. These were Indira's most turbulent years, and they called for a desperate attempt to stay afloat. In 1980, Indira Gandhi contested from 2 seats, from Raebareli and from Medak, then in undivided Andhra Pradesh, today in Telangana. Indira won both seats, and not unexpectedly, she retained the former. Fully aware that the Hindi heartland was not only a bigger deal, but extremely crucial to the future of the Congress party and to her political legacy. These were frenetic times of change and of tragedy. During the 1980 polls, the Congress bagged 51 out of the 85 seats of Uttar Pradesh. After Indira Gandhi's assassination in 1984, the Congress swept the state, winning 83 out of the 85 seats, a towering performance that has never again been matched even to this date. This was in Uttar Pradesh that had overwhelmingly chosen the Congress and had articulated its sympathy for the Gandhis. जो रायबरेली इंदिरा जी ने सजाया वो इंदिरा जी की व्यक्तिगत रुचि थी। उसके पहले उनके पति फिरोज गांधी साहब यहाँ चुनाव लड़ते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो फूलपुर से लड़ते थे, तो रायबरेली में कुछ था नहीं। मैं तो ये कहूँगा जो कुछ भी रायबरेली में औद्योगिकरण हुआ, विकास हुआ, चाहे वो ITI हो, चाहे एम्स हो, चाहे तमाम मिलें जो आई, रेल कोच फैक्ट्री कारखाना आया, ये सब गांधी परिवार की देन है। The Congress was the dominant party of Uttar Pradesh for well over 3 decades, barring the 1977 Lok Sabha election, where interestingly the socialist leader Raj Narayan
defeated Indira Gandhi in the anti-emergency wave. But barring that one moment, all the way from 1952 up to 1989, the Congress was a dominant force. Indira Gandhi passes away in 1984, and 1989, to my mind, is a defining moment. That's when the Congress finds itself suddenly on the back foot in Uttar Pradesh as the forces of Mandal and later Mandir begin to rise in UP. So that's the turning point. But that remarkable high was also ironically the beginning of a steady downslide. The Congress slumped to 54 out of 85 seats in 1989 and then further down to 51 seats in 1991. Flash forward a quarter century. The Indian National Congress had a new face leading the party. Former Prime Minister Indira Gandhi's daughter-in-law and Rajiv Gandhi's wife, Sonia Gandhi. इस पद पर बहुत बड़े-बड़े लोग रहे हैं। एक शताब्दी से भी अधिक समय तक उन्होंने अपने महान देश को दिशा दी।